Hello, good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Namaste. नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सब अच्छा है बढ़िया है सर. सर. बहुत बढ़िया. Morning, sir. Good morning, good morning. Let us get into today's SARAS meeting. So let us get into today's chart reading and today's chart reading. So what we do in every SARAS meeting is I don't reveal you the name of the person, right? I just show the charts to you, and maybe 1 hour advance I have given you the charts today. This time, I think it's an improvement from my side. Okay, next time I will try to give you 6 hours before, and then after that I will try to give you 12 hours before and all of that. But so what we are going to do is हम उस चार्ट को रीड करेंगे एंड कुछ सवाल आपको दूंगा उस चार्ट के बारे में. एक तो बिहेवियर कैसा था इस पर्सन का, ओवरऑल कैरेक्टर. ओके, मतलब ओवरऑल हैबिट्स बोलो, ओवरऑल नेचर ट्रेट्स बोलो, अपने ट्रेट्स मतलब बिहेवियरल ट्रेट्स कैसे थे, या फिर डिसीजन मेकिंग कैसे करते थे, राइट? ये आपको देखकर बताना है उस चार्ट को. एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, कौन सा फीलिंग ये बार बार महसूस करते थे, राइट? एक या दो फीलिंग ऐसे कौन से है, राइट, ऑन विच दिस पर्सन वाज ऑटोमेटिकली वेरी मच फोकस्ड ऑन. जैसे अपने भी इन योर चार्ट आल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड 2 to 3 feelings which are focused, मतलब most of the times, or it is very easy to for you to get into those feelings very easily. Okay, आपके चार्ट में भी होगा, but right now you try to analyze this chart. Okay, then how was married life? Try to check that for this person. Profession, ठीक है, try to understand the profession of this person, या फिर कौन से strengths थे for this person, which were the strengths of this person, जिसके हिसाब से profession उन्होंने चुना होगा या whatever. And finally in this particular case the reason for death. Okay, try to find out the reason for death, and also maybe whether it was a short life or a middle-aged life or a long life. Okay, try to guess these things. Sorry, I used the wrong word, not guess. Try to astrologically analyze these things. All right. Okay, so I'm going to share the chart with you. I had shared the chart in the morning in the app. Okay, so can you see both the charts here? Okay, तो मैं पहले चार्ट एक बार आपको गो थ्रू करवा दूं, and then I'll create a breakout. We have a good audience today. We have a good participation. Excellent, very good. So लिब्रा ascendant है, ठीक है. लिब्रा का डिग्री भी 14 है, तो ट्रांजिशन वाली राशि नहीं है, राइट? ओके, फर्स्ट हाउस में मी प्लैनेट तो होगा ही, एंड देन यूरेनस इज देयर. ओके, फर्स्ट हाउस यूरेनस वी हैव, सेकंड हाउस नेपच्यून वी हैव, एंड 12th हाउस प्लूटो भी, राइट? मतलब इंटरेस्टिंग चीज देखो, सर पे पूरे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो है ना. बॉडी के टॉप पोर्शन में you have Uranus, Neptune, Pluto. Okay, and then you have Rahu in the 3rd house, Ketu in the 9th house. Okay, Venus is there in the 4th house. Okay, house of happiness we have Venus. अभी डिग्री देख लो, डिग्रीज भी देखना जरूरी है. यूरेनस हमने देखा 3 डिग्रीज है, ठीक है. नेपच्यून 16 डिग्रीज है. ओके, एंड प्लूटो 12 डिग्रीज है. राहु इज 1 डिग्री एंड वीनस इज 5 डिग्रीज. मतलब राहु जो है 2nd एंड 3rd में है, वीनस जो है 3rd एंड इसमें है 4th में, राइट? Then we have the 5th house में Jupiter, Sun and Mercury.
Okay, all the three are there, but Jupiter is again 3 degrees. Okay, Sun is 13 degrees and Mercury is 11 degrees. Okay, फिर 6th house, Moon is there, लेकिन Moon की डिग्री कितनी है? 23 है. तो 6th भी and 7th, right? Mars 8th house में है, second राशि में, and again 5 degrees, so again 7th house and 8th house, Mars. Okay, ठीक है. फिर 9th house, 9th house में Saturn भी है. Saturn is at 4 degrees in the 9th house, right? मतलब we will look at 8th house also, and we will look at the 9th house also. All right. Oh. So that is the planet positions. Okay. And okay, थोड़ा सा guideline भी दे दूं. Yeah, so I ask you to check the behavioral patterns, right? तो check कर लो, first house check कर लो behavioral patterns के लिए, है ना? You will get the character of the person, you will get the personality of the person, the identity, how is the identity of this person, you will get that from the first house, right? तो उसमें से थोड़े से traits आपको, major traits जो है behavior patterns के first house से आपको मिल जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने कहा था कौन से फीलिंग्स पे ज्यादा फोकस रहा है, राइट? सो चेक इट आउट, कौन से हाउस में एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है आपको. अगर लेवल 2 हुआ है आपका तो तुरंत सालसा चार्ट बना दो, राइट? तो वो भी आपको इमीडिएटली मालूम पड़ेगा कि कौन से हाउस में एनर्जी ज्यादा फोकस्ड है और कौन से फीलिंग को बार बार ट्रिगर मिल रहा है. देन और क्या पूछा था मैंने? प्रोफेशन, राइट? प्रोफेशन के लिए हमें क्या क्या देखना है? असेंडेंट देखना है, राइट? फिर कौन से प्लैनेट्स आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है, राइट? यू हैव टू चेक दैट, ठीक है? लेवल 2 हुआ रहेगा तो एक अंदाज तो आ ही जाएगा आपको कि कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, कौन से प्लैनेट्स वीक है. फिर प्रोफेशन का हाउस, डेफिनेटली प्रोफेशन से इनकम हम जोड़ते हैं तो डेफिनेटली लुक एट द सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड द 10th हाउस, बिकॉज ऑल थ्री हाउसेस, these three houses are the income houses, right? So try to have a look at them as well कि कौन से planets है, कौन से planets का aspect आ रहा है and all of these things, all right? So check that out. Then I had asked you to check married life. तो मैरिड लाइफ के लिए प्रिडोमिनेटली क्या देखोगे? 7th हाउस देखोगे, है ना? फिर वीनस भी देखोगे, ओके? सो चेक दैट आउट, ओके? ऑफ कोर्स हर एक सवाल में फर्स्ट हाउस का इंटरेक्शन तो होगा ही, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनैलिटी, फर्स्ट हाउस इज योर बिहेवियरल पैटर्न्स, राइट? योर आइडेंटिटी. सो वो फर्स्ट हाउस का इंटरेक्शन तो हर एक चीज में हो, every question, okay? You have to look at the first house. Probably that can also be a learning for all of you, है ना? हर एक सवाल में without considering the first house you should not answer anything, okay? And then you have to look at then I had asked you to the reason for death या फिर span of life and all of that, right? So first house is Janam house, 8th house is death house, right? That is what we know so far, okay? So reason for death you will get from the 8th house, but then again you should get a confirmation from the first house also, है ना? कि भाई उनके बिहेवियर पैटर्न में भी तो कुछ तो होगा. अगर बहुत लेट डेथ होगा, फॉर एग्जांपल बहुत लंबी उम्र होगी, तो देयर विल बी डिसिप्लिन इन द बिहेवियर, right? Or there will be some health related things in the behavior or identity or something like that, no? So you have to check that first house का confirmation लेना बहुत जरूरी है. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? Uranus is there in the first house, है ना? So try to analyze on that sense. अगर आपने खाली level 1 किया हुआ है, no problem,
try to learn from others, right? Try to ask them, अच्छा ये यूरेनस यहाँ पे क्या कर सकता है, और फिर डेथ से क्या रिलेशन हो सकता है, and all of these things. Okay. 8th हाउस में we have मार्स है, नेपच्यून का एस्पेक्ट आ रहा है, और कौन है, सैटर्न भी है, राइट, केतु भी है ना? तो लॉट ऑफ एनर्जीज आर देयर इन द 8th हाउस, जस्ट चेक इट आउट. ठीक है. Okay, so some brief guidelines I have given you, and I hope all of you have the charts from your app. I'm quickly going to create the breakout rooms. Okay, I think 7 people per room is good enough, and everybody has to participate. If you find that someone is not participating, not talking, and all of that, just go ahead and report to me. Okay, send me a message. Okay. सर इनका वीडियो कंटिन्यूअसली ऑफ है, ऑन भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे, जाने क्या कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. सो टेल मी दैट आल्सो. इज दैट ओके? सो वी आर गोइंग टू go into the breakout room, and yes Sanjita ji. Okay, so breakout room will be for 33 minutes, and please go ahead and join the breakout. नमस्ते मैम. जी. सर मदर की तरफ से इनको इंसल्ट फील होगी? नहीं, पहले अपन लोग असेंडेंट को पकड़ते ना, असेंडेंट का क्या अच्छा. रहा है. मैं तो हाउस से फर्स्ट स्टार्ट लेवल ही किया है. अच्छा, ओके. लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं हम्म. फेवरेट पैटर्न के हिसाब से, एंड उसमें उनका प्लेजर गिवर, प्लेजर सीकिंग, सारी ट्रेड्स आ जाएंगे इनकी. लेकिन उस पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो थोड़ा मतलब बहुत इंटेलिजेंटली करेंगे. मतलब ऐसा नहीं कि बेतुके ढंग से करेंगे, जो भी लग्जरी करेंगे अच्छे काम में करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे. इंटेलेक्चुअल इज ऑलवेज देयर. As the seventh Taurus ascendant, and then Jupiter is aspecting first house. Seventh is Libra, ma'am. Libra ascendant. Libra ascendant, sorry. But there is aspect of Jupiter. Right. Very They true. will love to live luxurious life, but in a righteous way. अब देखिए फर्स्ट हाउस में क्या क्या एनर्जी इकट्ठा हो रही है, हम पहले उसको देख लेते हैं. जैसे आपने बोला कि लिब्रा असेंडेंट है, ठीक है, तो लिब्रा का भी ट्रेट रहेगा इसमें. जुपिटर का आपने बताया एस्पेक्ट आ रहा है, वेरी ट्रू, वो भी रहेगा. मून और मार्स इज आल्सो, मून एंड मार्स आल्सो लुकिंग टू असेंडेंट, है ना. तो मून, मार्स और जुपिटर और वीनस, ये 4 ट्रेट अपने को दिख रहे हैं. जो इनके पास मून कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है इसको? मून, हाँ, उसको सालसा के हिसाब से आ रहा है. अच्छा. मून का आ रहा है ना, मून का आ रहा है ना, वो 23 डिग्री ना, कॉन्फिडेंट कंट्रोलिंग है. तो मून, मार्स, लिब्रा, मतलब वीनस एंड जुपिटर, जैसे आपने बताया. तो इतने उसके पर्सनालिटी में हम देख सकते हैं कि इतने भाव आ रहे हैं. And Uranus is also there in first house. So यूरेनस आल्सो देयर. तो तो यूरेनस ये का सारे जो planets like it shows his personality कि इनको मतलब he is more of a like मतलब उनको affairs, romance, love, उस तरह का उनको मतलब he is generating that kind of situations in his life, more attracting more of those situations. जुपिटर है तो ज्ञानी व्यक्ति है. मून है तो इमोशनल भी है. मार्स है तो एनर्जेटिक है, अग्रेशन है ना. और एक वॉरियर का भाव भी है कि एक वॉरियर के जैसे कोई काम करेंगे तो उसमें जीतने की उनकी इच्छा है, वृत्ति है, और नॉलेज भी साथ में है. तो और वीनस है तो क्रिएटिविटी का वो भाव है ही है. मिशन होगा, कोई राइटियस मिशन होगा, राइट पे में होगा. हाँ, जुपिटर का उसमें आ रहा है ना, इसलिए राइटियस मिशन के लिए, अच्छे मिशन के लिए ऐसा उनका व्यक्तिमत्व दिखा रहा है. 7th राशि तो सुंदरता वाली राशि, मूवेबल राशि है ना. मूवेबल साइन है ये. 7th साइन इज मूवेबल साइन, राइट. तो मतलब वैसे एक जगह बैठने वाला व्यक्ति नहीं है ये. काम करना, कंटिन्यू काम करने वाला वृत्ति है.
रुकने वाला नहीं है, मतलब जो व्यक्ति है जो मूवेबल है, राइट। और कोई बताइए, पंकज भाई आप भी बोलिए, बाकी भी लोग है ना, कौन कौन है? हेलो, पुष्पराज जी बोलिए, स्पर्श जी। हाँ जी मैम, जी ये जी फर्स्ट हाउस में जैसे लिव- Fifth house sun is very egoistic. Then he's got what you call he's got a lot of aspects and planets in the 11th house. So which includes the full aspect of the sun, partial aspect of Jupiter and Mars. So now he's also got Mars aspect in the first house, which means he's very aggressive personality and mission oriented. No, but see, in again, Boliye. Uranus is in seventh house, first house, Mm. and in the seventh Rasi. It's in Correct. Venus Rasi. Uranus is not so happy. He's, as per the chart of the Pura prepare करेंगे SALSA chart, then we will know mood of the planet Uranus. But seeing it, we can say Uranus is not so happy because it is the environment of Venus. तो काफी लाइफ में जॉर्ड्स आते होंगे, शॉक्स जो है ना, शॉक्स काफी ज्यादा इनको लगता है लगा हुआ होगा। मतलब एवरी जब जो को भी जो मतलब जब मिलता होगा एंड ही विल बी कमिंग आउट विद न्यूअर आइडियाज टू हैंडल देम। Oh, that's what I said, is very unconventional, and वो भी झटका देता होगा सबको with all his actions and ideas. And if you see the profession, he seems to be in the share broking profession, because there's most active house is the share broking house. Share market broking, usme zyada hai. And if you see his entitlement also, it comes, most of the planet comes there. Sun is in the 11th house, sun's aspect, sorry. So, I mean, this is my opinion anyway. And regarding marital life, I don't think there's a problem at all. He's very happy. Wife is very supportive, according to me. And the wife is already in the happiness house. The maximum happiness from the house, from the spouse point of view. And spouse is also in 10th Rasi. And since he's got Mercury, Sun, and Jupiter in the share broking, share market house, that means he's got a very logical mind, which is contributing to his profession. And he's got Jupiter, which is also giving knowledge. So that house is really strong, according to me. Yeah, that's how marital life seems to be happiness, because it is in the 10th Rasi. Saturn and Sun and Venus both are happy and happy. And Venus is already in the happiness also. Yeah. Regarding the life, I think is the longevity life. Kafi, both Saturn and Ketu both are in the 8th house. Partially in the 8th house. Longevity life. As far as the second child is concerned, I believe there may be some challenges, maybe some very high difficulty the second child, because Saturn and Ketu both are there. And also Rahu is respecting the 9th house. And regarding age, I think he's obviously dead. So, but life, he has lived a very long life. No, middle age. No, sir, middle age. Middle age. It is, sir, because he was born between 56 and 71. Right, 56 and 72. And he's already dead. It is already, yeah. So he's 65 years, at the most 65 years. That is the lifespan. So that is not, full lifespan. Purnayu nahi hai, bhai. Purnayu nahi hai. Purnayu is more than 75. No, I didn't. How do you calculate that age? Pluto was between 56 and 71. Pluto is 36 to. Boliye, Ramakrishna ji, boliye. See, there are two factors. You asked me, I can answer your question in two things. First is, the short span of life is less than 32. Middle age is 32 to 75. Long age, that is Purnayu, is more than 75. 75 and above. Okay, sir, this is the first answer to that question. And the second thing is that we said Pluto is in the 6th Rashi, that is Virgo. Okay, so last time we got a pointer
as to how we can calculate as to which timeline one person belongs to. So there, between 1957 and 1972, this person could have been born. So that way, if you calculate the lifespan, it is not full lifespan. It is only, he is say in the middle age only. Okay, sir? रामकृष्ण सॉरी सर, ये कैसे कैलकुलेट किया कि 1950 वजह 67 See, last 71? I just googled हाँ, that okay. this thing that when was the last time Pluto was in Virgo Rashi. So Pluto was in Virgo Rashi between 1957 and 1972. Right. So coming back to our discussion, overall traits of this person, he is a Venus personality, and Venus Rashi having Uranus in the first house. Uranus is partial in the first house, and the other aspects in the first house are Moon, Mars, Saturn, Jupiter, Ketu. So this person is a very dynamic person. Could be a dynamic person and very ambitious at the same time. Married life, he would have had very happy married life because Venus is in the fourth house and partially sitting in the third house also. So his wife is both a source of happiness and a source of courage also. And if you look at the seventh house, there is Moon partial, Moon is there partially, Mars is there partially, Saturn is there partially, Uranus partial aspect, Rahu partial aspect, and Venus aspect is there. That is, Venus happens to be the Lagnesh. So comparing what we saw earlier about Venus and the seventh house, so we can say it is sort of a happy married life only. And related to his professional strengths, this person's Neptune is in the second house. Second house is also the house of speech, and that could have been one of his strengths. Core strengths could have been Neptune, and Neptune is aspecting the eighth house. Eighth house is Taurus. So he would have had a lot of hidden talents, which he would have unearthed, say, after a certain period of time. Reason for death would be Sun in the fifth house and Mars is there in the partially sitting in the eighth house. So एनालिटिकल होते हैं, मरकरी वाले एनालिटिकल होते हैं. तो मून इज सिटिंग इन मरकरी वाला नक्षत्र, तो एनालिटिकल हो गए. और छठवा सिक्स्थ हाउस है. सिक्स्थ हाउस इज ऑल रिलेटेड अबाउट वर्गो. 12th राशि आ रही, जुपिटर की राशि आ रही है ना. और जुपिटर जो बैठे हैं वो आपके मार्स वाली एनर्जी में, मतलब इनके यहाँ पे ऐसे दिख रहा है अपने को कि मार्स की एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट लग रही है. हाँ जी, तो तुरंत विचारों में, हाँ डिसीजन में भी. जैसे सन भी मार्स के नक्षत्र में, सैटर्न भी मार्स के नक्षत्र में. सैटर्न कर्म कारक है, वो भी मार्स के जैसे उस नक्षत्र में बैठा है. जुपिटर इज आल्सो मार्स नक्षत्र. जुपिटर ऑल अबाउट ज्ञान एंड ऑल, है ना. इनका प्रोफेशन मैसेज करने की कोशिश करते हैं. पहले फीलिंग सर जो बोल रहे थे ना, बार बार जो फीलिंग कौन सी आती है इसके बारे में सोचो, तो अपने को वहां से अपने को एक आइडिया मिल जाएगा. फीलिंग लव एंड कंपटीशन, स्पेशली ब्रेकिंग द लॉज, और वो यूरेनस के कारण अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच. अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच. अब फीलिंग के लिए किसको पकड़ोगे आप? फीलिंग इज ऑल अबाउट मून अगेन, तो मून का आएगा. हाँ, अब फीलिंग मून, और मून बैठा है, मून इज सिटिंग 6th and 7th.
है ना, 6 and 7. competition and love. कंपटीशन बोलो, सेवा बोलो, 6 हाउस ऑल अबाउट सर्विस आल्सो. 6 इज ऑल अबाउट आपके कॉम्पिटिशन हो गया, है ना. हाँ जी. 6 इज ऑल अबाउट देन जैसे अपन बोलते हैं रोग ऋण स्पाउस मतलब. सुंदर हो सकती है. स्पाउस सुंदर हो सकता है. कैसे बोला मैम आपने? मून 23 डिग्री है तो वो 7th में जाएगा. मून 23 डिग्री है तो वो मून इज इन 23 डिग्री तो इट विल गो टू 7th में. बराबर, सही बात है. तो स्पाउस ब्यूटीफुल. हाँ, मून हाँ ब्यूटीफुल होगी. मार्स भी अग्रेशन भी होगा मून में, वाइफ में, है ना. Yes. Yes. So please tell, sir. Please go. Please carry on. So just this one I can speak. Okay. Sapna ji. One second, I'll be. Okay. Dinesh ji. Yes, very good morning to all of you. Good morning. Good morning. About like as you said, now I was also focusing on that Venus is in the 4th house and effect of 3rd house also. So he both vice versa, he would be getting lot of happiness from his wife and luxury products also, branded things also. And similarly, he would be also source of happiness for his wife. So both, because it's the duality, no? So, and must be getting lot of happiness in having very luxurious lifestyle, branded things. Okay. Venus ascendant is there, so that way. Okay. Venus ascendant is also there, plus Venus itself is in 4th house. Partially. Yeah, 3rd, 4th, both. But I think where it is placed, that is the main house, no? I mean, it's like, no, it's not like that. It's not like that. It is a combination of energies. So how we have to look at both the places. Yeah. Actually, I have seen the chart for the first time when Sun showed it in the meeting. Otherwise, I haven't gone through the chart. Okay. And just luckily, generally, I go to Acharya Samaj at this time now. So now it is raining. I didn't go and attending the meeting. Otherwise, I am not able to attend the meetings now. Oh, okay. चौथी राशि बनेगी और 12वीं राशि 4, 8, 12 है ना. Neptune and Mars in the 2nd house aspecting. क्या बोला मोमिता? Neptune and Mars 2nd house पे और I think Saturn भी आ रहा है थोड़ा बहुत. The moon also 6th house. हाँ, अगर Saturn का हम लोग 8th house से 7th aspect पढ़ रहा है. बराबर. Moon effect will be there in profession. तो अपन लोग 2nd हाउस का अगर एनालिसिस करें प्रोफेशन के हिसाब से तो यहाँ पे केतु की एनर्जी आ रही है, मार्स की एनर्जी आ रही है और 8वीं राशि है तो मार्स डबल हो गया, नेपच्यून हो गया, है ना. सैटर्न की भी आ रही है. सैटर्न की भी आ रही है. हाँ, सैटर्न भी आ रहा है. ठीक है. उसके बाद में तो और राशि जो बन रही है अब जैसे 2nd राशि ना एक्युमुलेटेड धन बोलते हैं जिसको अपना, जो हम लोग बैंक बैलेंस जो होता है हमारा पैसा जहाँ जमा होता है वो दूसरा हाउस है. तो पैसा कहाँ से आया ये देखेंगे तो 8वीं राशि कहाँ गई हम वो भी देखेंगे. तो 8वीं राशि गई है इनकी कहाँ बैठी है. 8th lord is sitting in the 8th, 2nd lord sitting in 8th house. 8th हाउस. तो अपने को अनएक्सपेक्टेड मनी जैसे सडन गेन हाँ. सडन गेन हो गया. फिर 8th राशि सर ने अपने को से कहा था इज ऑल अबाउट आपका इसमें ना देखिए अब 8th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी हो गया, डिप साइंस हो गया, वहां से पैसा आ सकता है इनका आपका साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू पैसा आ सकता है. रिसर्च टाइप है ना, रिसर्च का पैसा हो गया इसमें. 8वीं राशि 8वां हाउस आपका और जैसे अपन लोग
इनका मार्स है सेकंड में, तो क्या हो सकता है? इनका 8th हाउस में मार्स है, सो मार्स एनर्जीज के साथ। मार्स तो 8वीं राशि है ना, ये आपको ये इसमें भी दिखाता है, जासूसी जिसको बोलते हैं ना हम लोग, खुफिया सर्विसेज, रॉ एंड ऑल। जो 8वीं राशि अगर आ रही है तो ये खुफिया एजेंसी हम बोल सकते हैं, साइंटिफिक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो 8th गया, हाउस रॉ तो वो वगैरह, सीक्रेटिव हाउस है ना, तो उसमें सिक्रेटिव। मार्स हाँ था ना, सो No, not only that. It is the first house, second house, 6th house, and 10th. So if you look 1, at the 6 and 10. yeah, 1, 2, 6, 10. 1, 2, 6, 10. Okay. First house, we look at this person, it makes him very ambitious. Second house, there is a lot of desire, there is a lot of Neptune energy. So Rahu's, the higher version of Rahu's Neptune. Neptune is also a magician. Correct. So both Only together augurs well. There, that's what I said about the maybe a little bit of detachment is there. Though he acquires and everything, detachment is also there. Detachment in the sense, some kind of CSR, corporate social responsibility. Rahu and Neptune both in the second house. Some profession related to second house, he must be expert in that. Bread and butter income. So what can we think about bread and butter income related to Rahu and Neptune? Rahu is related to technology. Technology, right? So this person could have been very good and adept in using technology, and very, highly interested in, being magical through whatever he does, because Neptune is there, and the changing avatars. So this person would not be the same all the time. This person will be, he might have dealing with people, different people in a different way, not in a one set formula kind of way. And changing the professions also. That also could be there. Sun, what Mr. Nagendra said, Sun in the 5th house, stock marketing, stock brokering, that also, yes, we can absolutely consider. There is nothing that stops. Plus, you see, if it's in the 11th house, again, 11th house is quite strong. So he's got multiple sources of income. He's an investor, perhaps. All this obviously No, shows I was that. thinking only that because he might have a multiple resource, because all these aspects to the 11th house also. 11th house is also very a strong social network also might be there. In the 11th house, so many aspects are there. Yes. And Rahu in the 3rd house, he must be desirous of name and fame. Very much desirous of attaining name and fame in his life. And something might be related to his speech. 2nd house, Neptune and Rahu both are present. Speech or singing, something like that. Yeah, that also could be possible. He has a zest for life. This gentleman, as long as he lived, he has a zest for life, very enthusiastic, loved to live a good life. I can put it that way. He didn't, he might be simple, but definitely, very enthusiastic about his lifestyle. Okay, travels a lot. Yeah, somebody, one of our group members, I think Pushpaji was talking about the formula related to the 7th house. So 7th house, the formula has Venus in it, no? Yeah. Venus is there in the 7th house, the 7th house formula. Yes, right? Yes. But yes. here Saturn, we Venus, don't and have, Mars. yes, Mars house. Mars is the Rashi Lord. We don't have Venus at all. I mean, only way Venus is coming is through ascendant. So we have Venus. That quality is getting satisfied. Yes, yes.
He's definitely got luxury and thing as money as expectations in his life. Money appreciation also he would be very much desirous so that others appreciate him, recognize him. Yes. And he would be attached to his children also. Jupiter present in the Jupiter fifth is there, house. then Mercury is there. Mercury is there. So Mercury is slightly cumbersome, but that is okay. That normally happens. So Saturn, Ketu's partial aspect is also there in the fifth house. 15 जुलाई है वो उन्होंने पे करना होता तो लिखा था 11 तक पे कर देते वो करना है तो मैं अभी वो करवा सकती हूँ वो अब नहीं करेंगे ना मैंने वो दिनेश जी म्यूट कर दीजिए. Sun in fifth house, can it create any heart issues? Yeah, that's what the reason for death could be. Generally third डेथ का रीजन क्या हो सकता है? एक्सीडेंट. मार्स है इसलिए 8वें घर पे इसलिए बोल रहे हैं? नहीं मैम, राहु का भी एक्सपेक्ट है ना. राहु का भी एस्पेक्ट आ रहा है, केतु भी आ रहा है उसमें. केतु भी आ रहा है. अब इसमें देखिए कि इसकी लॉन्ग लाइफ है, शॉर्ट लाइफ है या मिडिल लाइफ रही इनकी. तो इनका है तो मुझे लगता है केतु राहु है ना. मुझे लगता है कि एवरेज मिडिल रहा होगा, ऐसा लग रहा है आपको? केतु आ रहा है 8वें घर में और मार्स वहां बैठा हुआ है. सैटर्न भी आ रहा है. सैटर्न ये 4 डिग्री है तो सैटर्न भी आएगा. सैटर्न जब बैठेगा तो वो थोड़ा सा ना वो धीरे चलने वाला प्लैनेट है ना. तो क्या करेगा, सैटर्न जब बैठता है तो मतलब वो बढ़ा देता है, मतलब आपकी आयु ज्यादा देता है. एज शुड बी ज्यादा, ऐसा बोलते हैं कि सैटर्न जब 8वें में बैठता है तो सैटर्न 8वें घर को देखता है तो आपकी एज यहाँ पे ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस आ रहा है बट मार्स है ना, तो मार्स का मोस्टली लाइक एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकता है. एक्सीडेंटल डेथ फायर से. लेकिन जो राशि कौन सी बन रही है, राशि देखिए कौन सी बन रही है. राशि जो है उसमें जो एटमॉस्फेयर है तो जो वो बन रहा है वो क्या है? सेकंड है, वीनस का है ना. विनस और वो वीनस जो है वो राशि जो है आपकी फिक्स्ड है, फिक्स्ड राशि है, राइट. फिक्स राशि में आपके मार्स, सैटर्न और केतु की एनर्जी आ रही. नेपच्यून वहां से आ रहा है. राहु भी दिखेगा. राहु ना एक्सीडेंट कराता है या फिर मतलब क्या होता है ऐसी, मतलब सडन डेथ देता है, कोई हार्ट अटैक हो गया या ऐसा जो भी. कैसे? मैंने सुना नहीं एक्चुअली, फोन आ गया था. क्या बोल रहे थे? अनएक्सपेक्टेड डेथ जैसे इसमें ऐसे अनएक्सपेक्टेड डेथ देता है मैम राहु. हाँ, सैटर्न केतु का इफेक्ट है. एक्सीडेंट देता है और ऐसे सैटर्न भी देता है. ओके. और तो आपको लगता है सडन डेथ हो गई, मतलब अल्पायु होगा, ऐसा आप लोगों को लग रहा है ना? राहु का मार्स से भी आ रहा है क्या? नहीं, मार्स वहां बैठा 8वें घर में. राहु देखेगा, सेकंड हाउस से देखेगा ना, एस्पेक्ट आएगा उसका. तो इनके ब्रदर, इनसे भी नहीं बनेगी, ब्रदर से भी नहीं बनेगी. राहु, सैटर्न और केतु तीनों का एस्पेक्ट है डेथ पे. Always think about male sort of a female, right? मेल नहीं मेल करके नहीं, फीमेल करके भी सोचना चाहिए. What I'm observing, he is something like that. वो हमारा नेचुरल सेंस है, लेकिन वो ज्यादा maybe a female also, correct? Yeah, female also. We don't know that. I mean, that doesn't matter actually, but what I observe is usually we jump into a conclusion type, like it may be a male chart. So that's where I feel. Every time when I observe, that is what happens. Sure. Yeah, absolutely right.
Well, actually, ma'am, Because most I of was the thinking time we about get the male chart. no, because I was thinking about Jupiter in fifth house. Maybe if it is a female or something, during the childbirth, they might have a problem. Like that, I was thinking. Ah, okay. So then it comes to this thing where every time we talk about the male chart only like that. Okay. Yes. All of a sudden, everyone is silent. We're just Yeah. analyzing. Concluding this thing, whatever we discussed. Because if you see, Neptune's energy is very good. So I'm just trying to focus on that and see what is that Neptune is contributing, because Neptune is like 16 degrees and sitting in the second house, aspecting the eighth house. So Neptune, we know already that what kind of an impact Neptune gives to a person's chart. So that's what I'm just trying to understand. Ramakrishna sir, Mercury in the second house. Mercury is in the second house. Mercury is in the fifth house. पांचवा घर में है ना. Mercury is sitting confident in the fifth house. पांचवा घर में है. चेंजेस होगा. वीनस भी है. वीनस सन की एनर्जी में बैठा है. सैटर्न मार्स की एनर्जी में बैठा है. सन मार्स की एनर्जी. जुपिटर भी मार्स की एनर्जी में. तो मार्स तो हो सकता है कि कोई ना ये व्यक्ति अपन ने जैसे बोला ना मिलिट्री वगैरह से रिलेटेड होगा, कोई खुफिया एजेंसी से रिलेटेड हो सकता है. इस तरह का वर्क जहाँ पे मार्स की एनर्जी ज्यादा काम करती है. नहीं, ग्लैमर भी हो सकता है बिकॉज बहुत ज्यादा नेपट्यून वीनस एंड वो सब का रहा है. एंड मार्स मतलब आपको हो सकता है ही इज मोर इनटू लाइक जब एक्टिंग इंडस्ट्री है ना, जो तो उसमें अग्रेशन वाला भी तो काम होता ही है. वहां भी तो हिम्मत चाहिए. वहां भी हिम्मत चाहिए. बहुत ज्यादा एक्शन वगैरह सीन्स होते हैं ना, तो उसमें भी मार्स की जरूरत पड़ती है. ज्यादातर अपने को नेपच्यून के कारण अपन बोल रहे हैं कि ये जो है बंदा जो है मीडिया से वर्क कर सकता है, क्योंकि सैटर्न भी तीसरी राशि में बैठा है. चौथी राशि जो 10th हाउस में फोर्थ राशि है, इसको वीनस देख रहा है ना. इसके कारण अपने को लग रहा है जुपिटर और मरकरी का भी एस्पेक्ट आ रहा है फोर्थ हाउस में, वहां से वो 10th हाउस को देख रहे हैं. Okay, so this person firstly is a female. Okay. Okay. I was discussing that. Yeah, I heard Dr. Sapna discussing that, and we immediately start saying, no, he is this, he is that, he is this, and he is that, right? No, every time that's what it happens. No one will think about a female. Right. And when I saw the Jupiter, I felt that maybe a female. अच्छा. सर ये फीमेल है, ये कैसे वो नहीं बता निकाला जाएगा? नहीं, वो सर को मालूम है ना. सर ये क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं. वो मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं नहीं सर, फिर भी अगर देखना है तो कैसे देखा जाएगा कि एक कुंडली आदमी की, स्त्री या पुरुष की? नहीं, कितने बार बताऊं, नहीं देखा जा सकता. नहीं देखा भी नहीं चाहिए. It was just my this thing, seeing a Jupiter. I felt every time we discuss about a male, not a female. So that's the point. Okay, ठीक है. Secondly, very energetic person, मतलब behavior traits अगर हम ये करें तो very energetic, lot of sudden initiatives this person takes, and
and this person had a lot of aggressive energy inside. Okay. So what astrological reasons you can see for all of these things? Uranus. Mars energy is there. Uranus in Uranus is there in the first house. Correct. Mars, Moon, Saturn, Jupiter, Ketu, all are aspecting the first house. Okay. Which happens to be Venus is the ascendant. Correct. So this person makes a person very ambitious. Correct. Very good. Very और सर beautiful. इसके हाँ सर, और इसके जो मैक्सिमम सन भी इन मार्स नक्षत्र, सैटर्न इज इन मार्स नक्षत्र, जुपिटर इज आल्सो इन मार्स नक्षत्र, Okay. केतु इज आल्सो इन मार्स नक्षत्र. सो नक्षत्र के हिसाब से भी देखे तो सर मार्स की एनर्जी काफी एक्टिवेट है. काफी एक्टिवेट. And sir, the second house where you have 8th Rashi and Mars is partially aspecting. Neptune is sitting there. Right. Rahu is partially sitting there. So that this person used maybe 8th house. Scorpio is also a very secretive house. We can also look at it that way, right? So if we look at it that way, then this person has used latent abilities. So that person did not know for some time that that person had that kind of strength. Okay. So that also, that angle also we're just trying to. Let's see. Let's see. Very beautiful person. Very beautiful. Very charismatic. Very charming. Very sensuous. Very beautiful. How can you see that? Venus ascendant. Venus Venus ascendant. Straight. Libra ascendant. Okay, but only being Venus ascendant will No. Moon is there in the seventh partial aspect is there. Moon 7th में जा रहा है. Okay. And और वीनस जो उसका लॉर्ड है सर, वो सन के नक्षत्र में बैठा है, तो वो एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व जिसको हम बोलेंगे. Okay, but I'm talking of physical looks of this person. Okay. I'm talking of physical looks. So seventh house वाला देखेंगे तो उधर मार्स का, सैटर्न का पार्शियल एस्पेक्ट सिटिंग है, और यूरेनस, राहु, मून का भी पार्शियल है उधर आ रहा है. तो वो सबको मिला के इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड बोलते हैं. तो उधर okay, inner world, outer world. Excellent. Okay. No, salsa में तो सीखा है मैं. Right. Correct. No, I also remember. Acha, you remember that? Okay, excellent. Very good. So, which planets out of the 12 planets can we say to be very beautiful planets? Or Venus, planets which can be signified with beauty, right? Venus is one, sir. Venus is one. Venus, sir. Correct. Neptune is also there. Uranus also, sir. Moon Uranus. Moon also, sir. Moon, Venus, Uranus. Moon is one. I wouldn't consider Uranus that much, right? But I will definitely consider these three planets: Moon, Venus, and Neptune. Moon and Venus. Abhi, if you look at this chart, no, all these three planets are well spread out. मतलब देखो, Neptune affecting the top portion of the body, Venus affecting the middle portion of the body, right, and Moon affecting the lower portion of the body, right? So beauty is well spread out, is what we can say. मतलब इनका aspects भी spread out ऐसे होगा कि the entire body is getting affected. For example, Moon will go into the 12th house also, right? 11th house also. Sorry, in the first house also, right? तो चेहरे पे Moon आ रहा है. Understood? Neptune देखो, आंखों में Neptune है, right? फिर voice में Neptune है ना? और फिर Neptune का एस्पेक्ट भी नीचे की तरफ आएगा 8वें घर में. अंडरस्टूड. नेपच्यून का डिग्री कितना है? 16. ओके. लेकिन मून का, हाँ, मून दोनों जगह पे है, 12th में भी है और इसमें भी है, 7th हाउस 12th में और फर्स्ट हाउस में भी आएगा, है ना? एंड वीनस देखो, वीनस कितना डिग्री है? 5 डिग्रीज है. तो 3, 4 एंड 9, 10,
अंडरस्टूड. सो अगर 9 में आ रहा है तो थाइज विल, यू नो, वीनस कैन मेक थाइज वेरी ब्यूटीफुल, राइट. 10 में आ रहा है तो अगेन, यू नो, legs are very beautiful, knees are very beautiful, and all of these things. That is what Venus is, you know, trying to do there. So आप भी देख लेना अपने चार्ट में ये, you know, whether how attractive and how beautiful a person can be studied from these 3 planets if they are well spread out throughout the chart. वो और उनके aspects. रामकृष्ण जी तुरंत अपना चार्ट देखने लगे. नहीं, नोट कर रहा हूँ. अच्छा, नोट कर. सर यहाँ पे अगर हम टॉप हेड पोर्शन देखेंगे तो 12th 1 and second house पे टेल देंगे. Second, third, fourth and fifth will be mid portion of the body. That's so, sir. हाँ, वो अपना है ना, शोल्डर वगैरह वो सारा चीज है ना अपना. ना वो that is okay सर. नहीं वो जैसे कि हेड पोर्शन हो गया 12th 1 and second house को 1 second हेड पोर्शन. हाँ, ठीक है. and third, fourth, fifth would be mid portion. हाँ, correct. Right. Okay. Thank you. Sir, Jupiter in the 5th house means big belly, you say, no? Yeah. But obviously, if this person doesn't have a big belly, the way you're saying, rest of the thing is well proportioned. But Jupiter is only partial, no? There. Jupiter is partial, and sun is burning the fats. Oh. Let us say that also. All right. But definitely she must be working very hard in maintain. Okay. क्या बोल रहे ममिता जी? मैंने कहा ने बहुत अच्छा से वो literally meaning sun is burning the fats. Mercury is intellectual, so she is very sensitive. She is very right. हीरोइन हो सकती है. Okay. देखते हैं अभी तक. Let's not jump to conclusions. Okay. ठीक है. So this is about the looks. Okay. This person died of an accident. Oh, that's what I सबने बोला था We सर. guessed it, sir. We guessed that. Accidental death. Mars, Rahu. Mars in it. Rahu, Mars effect. Mars influence. Okay. Ketu is coming in 8th house. Okay. So, what is your conclusion? What do you think? Died of an accident. 8th house sir. 8th house. अच्छा, ये डेथ के अराउंड कोई कंट्रोवर्सी होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल. राहु ऐसा कंट्रोवर्सी होगा. ओके. केतु उधर पार्शियल बैठा है, राहु भी उधर एस्पेक्ट कर रहा है, तो पक्का कोई ना कुछ कंट्रोवर्सी रहा होगा. ओके. लेकिन what do you think? Rahu is much stronger or Ketu is much stronger here? What do you think? Rahu is stronger. Why do you say so? नहीं, I think so. केतु होगा ना सर. Ketu would be more stronger. क्योंकि Rahu and Neptune both are there, तो Neptune is high in confident energy में है, Rahu is partially में, तो Rahu थोड़ा subdue होगा, Ketu is काफी stronger आ गया. Overall mood of SALSA, mood of planet. SALSA, mood of planet. What do you think? Ketu would be more stronger than Rahu. Negative Rahu is Ketu. That's what you're trying to say, Rashmi ji. Okay. Sir, Rahu is sitting in Sagittarius. So Sagittarius is the Lord is Jupiter. So Rahu will not be happy there. Okay. But that is only one of the points, no? Yeah, that is why. Out of 12 points we check for mood of the planet. चलो देख लेते हैं ना फटाफट. राहु कंजंक्शन में किसी के साथ देखो. Saturn और केतु का aspect आ रहा है उसमें. केतु is sitting in Mars energy. एक मिनट है. राहु किसी के साथ कंजंक्शन में है क्या देखो. इज राहु इन कंजंक्शन नेपच्यून के साथ में थोड़ा सा कंजंक्शन है. वेरी स्लाइट कंजंक्शन विद नेपच्यून, राइट. एकदम नजदीक है. ठीक है. राहु नेपच्यून का क्या रिश्ता होगा? यहाँ पे दोस्त बन जाएंगे वो. राइट. ठीक है. फिर उसके बाद राहु कहाँ पे बैठा है? मर्क्यूरी के घर में बैठा है, राइट. सो दैट इज आल्सो न्यूट्रल वाला रिलेशन, राइट. देन राहु सिटिंग इन जुपिटर्स राशि, राइट. सो दैट इज वेयर राहु का मूड नीचे चला जाएगा थोड़ा सा. करेक्ट. ओके. यस और नो?
Yes, sir. Okay, Yes, okay. Yes, sir. Rahu is aspected by Mars, Saturn, Ketu, Venus. and Venus कहाँ से? Venus का नहीं. इन तीनों planet का aspect आ रहा है. Aspect जा रहा है, but Rahu is near same planet में, same house में है, Venus के house में. Okay, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से second house Venus. So, अच्छा अच्छा, okay. तो नहीं, Venus is also coming in third राशि ना? 5 degrees करके है इसीलिए. Okay, Third house. राहु again. So ठीक है, दोनों इसमें houses में है ना, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. वीनस का हाउस में तो वहां पे उसको थोड़ा अच्छा लगेगा. Venus का हाउस में है और Venus के साथ है थर्ड हाउस में partially. Partially. ओके, ठीक है. देन राशि में भी दोनों, मार्स की राशि में और जुपिटर की राशि में, खैर दोनों पसंद नहीं है राहु को, है ना. तो राशि वाइज पोजीशन में थोड़ा सा ड्रॉप आ रहा है मूड में, लेकिन हाउस वाइज पोजीशन इज ओके. हाउस वाइज पोजीशन इज गुड. ठीक है. Also, एंड Venus is friend to सैटर्न इज एस्पेक्टिंग, तो एक बार न्यूट्रल है सैटर्न यहाँ पे. केतु इज एस्पेक्टिंग एंड मार्स इज एस्पेक्टिंग राहु. ओके, तो आई थिंक ओवरऑल ना, आई एम गेटिंग अ फीलिंग एक न्यूट्रल मूड ऑफ राहु इज देयर. ओके, एंड राहु इज एस्पेक्टिंग किस किस को? मून को देख रहा है. देन यहाँ पे कोई नहीं है. यहाँ पे मार्स को देख रहा है. यहाँ पे सैटर्न केतु को देख रहा है. यहाँ पे कोई नहीं है. यहाँ पे भी कोई नहीं है. So I think overall na, neutral mood of Rahu, or little bit on the negative side because of the aspects. Okay, that is what we can say. That is the mood of the planet. केतु का देख लो, कंजंक्शन किसके साथ है? सैटर्न के साथ कंजंक्शन है क्या? यस, सैटर्न के साथ तो है सर. ओके, तो वो उसको पसंद आएगा. और मार्स के साथ नहीं है सर. नहीं. ठीक है, तो केतु का मूड यहाँ पे बेटर हो रहा है बिकॉज सैटर्न्स कंजंक्शन इज देयर. एंड व्हाट एल्स, किसके घर में है केतु? मार्स के और Mercury. नहीं, जुपिटर के घर में. जुपिटर का घर है. Jupiter. Rashi is Mercury. राशि मैं मरकरी. घर की बात कर रहा हूँ ना. यार जुपिटर का. करेक्ट. तो ये है मार्स का घर, ये है जुपिटर का घर. तो घरों में थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन राशि में ये वीनस की राशि और ये मरकरी की राशि, अगेन राशि वाइज फ्रेंडली राशि. ओके, केतु इज ओके, बट देन अगेन वीनस बिकम्स न्यूट्रल एंड मर्क्यूरी किधर है? ओके, मर्क्यूरी इज आल्सो फ्रेंड. ओके, फ्रेंड है मर्क्यूरी. ठीक है, चलो. Overall, I think Ketu is happy in that house. So, राइट. एंड एस्पेक्ट किसका आ रहा है केतु के ऊपर? देखो, राहु का, वीनस का और जुपिटर का पार्शियल एस्पेक्ट आ रहा है. वीनस का पार्शियल आ रहा है और जुपिटर का आ रहा है. राहु का आ रहा है. और इधर सेकंड राशि में नेपट्यून का आ रहा है और जुपिटर का आ रहा है. राहु का भी. राहु का भी आ रहा है. राहु का. So I think this is also on little bit, neutral or negative side, little bit, not much. मेरे ख्याल से दोनों energies are neutral only, Rahu and Ketu. We will have to find out mood of planet निकाल के, but I think more or less they are neutral energies, Rahu and equal. हाँ, अगर नेगेटिव भी होंगे तो नेगेटिव राहु होगा तो वहां पे केतु बन जाएगा, यहाँ पे राहु बन जाएगा, है ना. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, do you think there were controversies regarding the death of this person? Sir, Neptune aspect is there in the 8th house. Does it give a clue that there could be a drug over usage or something like that? It can give a clue. Definitely the clue is there, but we don't know the mood of the Neptune. That is addiction, some kind of addiction. Some that is kind what, of addiction.
right? But सर डेथ में मीडिया का कवरेज हुआ होगा हाँ, क्योंकि death- नेपट्यून इज देयर, राइट, मुझे लगता है सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया। डेथ के बाद ये काफी बहुत हाँ। पॉपुलर हुए होंगे, बिकॉज डेथ से पहले जितने पॉपुलर हुए होंगे, डेथ के बाद ये काफी लाइमलाइट में आए होंगे, काफी पॉपुलर हुए होंगे, और काफी नाम होंगे, काफी ग्लोरियस काइंड ऑफ डेथ को बनाया गया। Okay, let me give another clue. This person died at the age of 19 only. 19. Yeah. 19 Wow. काफी बहुत कम उम्र में। बहुत कम एज। क्या हुआ Saturn in 8th house वालों? हाँ सर, मैंने बोला था। This is the second or the third case. This is the second or the third case. विद्या भारती सर, जिया ने हैकिंग ने। अच्छा, अभी मालूम हो गया, ठीक है, अभी मालूम पड़ेगा ना अभी कौन था। नहीं, कौन है मालूम हो गया, दिव्या लेकिन भारती। मैं अपने आप को बाद में। दिव्या भारती। Divya Bharati was not 19 when she died. सर Yeah. She was much सर older. इसमें ना आप 8th हाउस में मैक्सिमम जितने भी प्लैनेट्स आ रहे हैं, उनकी जो एनर्जीज बन रही है सर, वो ज्यादातर मार्स की बन रही है। सैटर्न भी मार्स के इसमें है। उसके बाद में आपका केतु इज आल्सो इन मार्स नक्षत्र, और मार्स जो है मार्स सन के नक्षत्र में है। और वहां से भी अगर देखेंगे आप तो राहु तो चलो केतु के नक्षत्र, मतलब मार्स की एनर्जी बहुत बन रही है। जिया शर्मा शायद से। और सर आपने जो बोला था नहीं, ये वो- प्लूटो की पोजीशन लास्ट सर्विस हाँ, में बोला था ना, प्लूटो की पोजीशन देख के आप तो बता सकते हैं, मतलब 1957 to 1972 वाला उस टाइम पे उनका 1956 to 1917 मैंने निकाला था, Okay, प्लूटो okay. इन 6th हाउस। Okay, and final clue. This was a very beautiful actress, very upcoming, lot of awards she won. It was a big shock to the entire industry that she died. And again, actress बोलेंगे तो again, you know, profession wise, Neptune plus Rahu connection देखो वापस कितना काम दिखा रहा है यहाँ, right? Neptune plus Rahu happening in the 2nd house and the 3rd house. And Neptune and Rahu coming together, right? Almost in conjunction, no? Right? So 2nd house becomes that magical house. Venus ka house hai, right? And then आवाज का house है ना? Expressions का house है, glamour का, I mean Venus का house है तो glamour portion तो आएगा। ऊपर से Venus is sitting in the 4th house, right? Which is house of luxuries, house of you know, aspecting the 10th house, profession is there, and ऊपर से ascendant is also Venus, हैप्पीनेस, right? ऊपर से ascendant is also Venus, right? सर हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने गेस किया था ये मीडिया से रिलेटेड हुए। यस यस। मीडिया से रिलेटेड और एक्ट्रेस होना दो अलग अलग बातें। ये वो लेडी का पता नहीं था सर, वो लेडी है कि जेंट्स है, लेकिन हाँ ये बोला था कि ये हमने गेस किया था, फिल्म लाइन से बोला था सर, ममिता ने जरूर गेस किया था। गैस ये वर्ड मत यूज करना, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हमने एनालाइज किया था, ऐसे बोलना, राइट? लाइक वी आर नॉट यू नो गेस्ट पीपल, राइट? वी आर एस्ट्रोलॉजर्स, राइट? सर इसका शादी हुई कि नहीं मालूम हो सकता है? शादी हुआ, 1 साल के बाद उनका डेथ हो गया आफ्टर द मैरिज, सो शी गॉट मैरिड टू साजिद नाडियाडवाला, Then Divya Bharati. right? And then so yes, this person is Divya Bharati. She died at the young age of 19 only, and she slipped off balcony Window. and fell, and then a lot of drama happened after the death, and the entire industry was entirely shooken, and a lot of things happened after the death, right? She was only 19, is it? Divya Bharati when she died. इल्यूजन राहु का भी कैन जस्टिफाई सर, बिकॉज उनका डेथ के बारे में काफी इल्यूजन रहता है कि कुड बी सुसाइड, कुड बी मर्डर काइंड ऑफ, वो सब भी बहुत चला था डेथ के। कंट्रोवर्सी हुआ भी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी डाई ऑफ भी हो गया, दब गया था, किसी ने दबा दिया, right? Nobody got any proofs about anything, and all of those things happened, right? So yeah, can we see, like, is it a suicide or somebody attempted to murder, वैसे कुछ बोल सकते हैं क्या? we can come up with a lot of probabilities,
राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है देखो. एक तो मार्स एनर्जी इज वेरी हाई, ये तो हमने देखा है ना. मार्स इज सिटिंग इन द 8th हाउस ऑल्सो, राइट. ऊपर से यूरेनस इज देयर इन द 1st हाउस, राइट. तो लॉट ऑफ झटकास. दिस पर्सनालिटी इज फुल ऑफ झटकास, गिविंग झटकास टू पीपल, right? That is definitely there, right? Personality is full of jhatkas, no? Yes, true. New creations, sudden decisions, right? Then sudden behavioral changes and all of these things, right? So personality में तो वो सारा चीज है ही, right? At the same time, Ketu aspects personality house, correct? So, and what is degree of Saturn? Also 4 degrees, right? Okay. So, Ketu is aspecting personality house, Saturn is aspecting family house. Right? तो overall लोगों से एक detachment हो सकता है, and overall एक खुद से भी एक detachment हो ही सकता है. Right? That is definitely, you know, one thing you can say about this. So yes, the idea of suicide cannot be ruled out, right? But we cannot be absolutely sure, because astrology any which ways is ultimately probabilities only. तो मार्स और केतु की एनर्जी क्या हम बोल सकते हैं सुसाइडल, मतलब सुसाइड के लिए भी आपको धैर्य चाहिए, मतलब ये चाहिए, एनर्जी चाहिए, सोच चाहिए. राहु का भी एस्पेक्ट जा रहा है. मार्स है तो करेज तो आ ही रहा है. करेज चाहिए. और केतु बोले तो डिटैच, खुद से डिटैच हो जाना. खुद से डिटैच हो जाना. लेकिन वो कंजंक्शन में है क्या मार्स और केतु? नहीं, थोड़े से दूर दूर है मार्स 5 है. हाँ, केतु 1 डिग्री दूर है, थोड़े दूर है, ठीक है. बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी डेफिनेटली इज एक्सीडेंट, राइट. लेकिन इनको ना लोगों को झटका देने का डेफिनेटली ये होगा, बिहेवियरल पैटर्न तो होगा. आई थिंक सर ये जितना झटका खुद लिए होंगे, उससे ज्यादा झटका लोगों को दिए होंगे, क्योंकि मार्स और वीनस का. राइट. So okay, so these are all probabilities that are possible. Okay, but any which ways, let us give a big round of applause to Divya Bharati's life, her career, the way she entertained us, and you know, let us show that respect. And thanks to her for allowing to, you know, analyze her chart. What did you learn today? Don't jump to conclusions. Sir, I learned today Pluto regarding Pluto's death period. I did that in last class. I could not. Sir, this time I learned that one. Okay. Sir, one small question. Our company's New India Assurance. Yes, Ramakrishna ji. Sir, you know, when we look at 8th house Saturn partial, a lot of people, we all, I mean, including me, we all jump to the conclusion that that person would have lived very, I mean, not very short life, a long life. Long life. We tend to think that way. So, but this is not the case. So that also we need to factor. Yes. New learning. Yes. You need to factor a lot of things. Predict कि this person आपको ये भी realize होगा कभी-कभी कि स्वराशि में प्लैनेट से कभी-कभी ज्यादा खुद के हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट ना ज्यादा रिजल्ट देता है कभी-कभी, राइट. जैसे यहाँ पे दिख रहा है मार्स इज सिटिंग देयर नो इन इट्स ओन हाउस 8th हाउस ओनली. और दूसरा भी अगर हाउस अगर देखेंगे तो वो भी जुपिटर का ही हाउस है, दोस्त ही है उसका भी, है ना. तो सी दैट कॉन्सेप्ट नो कि खुद की राशि में है या दोस्त की राशि में है या उच्च है या नीच है, right? Many times you will see that concept failing, right? Many times you will see that concept failing. Okay. So the house is more important. That is why all the factors you have to check. That is why mood of the planet, right? That is why SALSA mood of the planet becomes very, very important. All right. Yes, Nagendra ji, what was your question? Sir, I just wanted to know, you said she died at the age of 19. Yeah. So I just wanted to know, is there any way from the chart whether the person lived a short life, middle life or a late life? ऐसा कुछ indication मिलेगा? हाँ, definitely मिलेगा ना. Astrological science है. Yeah, astrologically definitely will get an indication.
by checking the mood of the planets. Okay. Right? अभी इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं? We are connecting a lot of things together. For example, we have to check this person's personality. Right? So that is why first house. मैंने क्या कहा था कि you have to check first house involvement in every question. Right? So even in the question of death also, you have to check the first house as well. Right? Why Uranus is coming in the first house? उनकी पर्सनालिटी में ही, आइडेंटिटी में ही झटका देने वाला ये है नया सडन क्रिएशंस और सडन हैपनिंग, सडन इवेंट्स. राइट? दिस इज अ ह्यूज थिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ, है ना? So this we have to factor when looking at the 8th house also. So first house involvement is, you have to see first house involvement in every question. Okay, जैसे फर्स्ट हाउस में हमें दिखेगा यूरेनस भी है, and we will see me planet which is Venus. Right? The ascendant is Venus ascendant. Right? That is what we will see in the first house. Right? And then you look at the 10th house. Venus is aspecting the 10th house also. Then you look at the second and third house, जहाँ पे Neptune and Rahu are together. Right? All of these factors should lead you to the conclusion, or let's not say conclusion, but to a possibility that this could be a short life. Nahi. Someone who is related to Venus, glamour, and someone who is related to whose strengths are Venus related strengths, because Neptune and Rahu are also together in the Venus house. है ना? So that is how you can kind of come to a profession also. खाली 10th house देख के profession नहीं बोल पाएंगे हम. Right? So if a person of this chart comes to us, we can suggest acting or the what you call glamour field as a probable career choice. Definitely you can suggest that. Right? और फिर वो ऐसा आप बोलोगे ना, वो तुरंत बोलेंगे हाँ तो मुझे तो एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मुझे अच्छा रहना बहुत पसंद है, ऑटोमेटिकली बोलेंगे. राइट? नेचुरल स्ट्रेंथ तो ऑटोमेटिकली, उसके लिए तो चार्ट भी उन्होंने खुद ने तो देखा नहीं रहेगा, लेकिन नेचुरल स्ट्रेंथ के बारे में तो उनको मालूम ही रहेगा ना. राइट? ओके, व्हाट एल्स डिड यू लर्न? सर एक चीज और देखी क्या, जिस तरीके से आपने बताया कि किसी भी चार्ट के अंदर बोलते गायब, इनका जैसे हमने सीक्वेंस में हमने देखा मिडल बॉडी ब्यूटी और ब्यूटी दिखनी चाहिए है सर. तो वो स्टेप्स को भी किसी भी के साथ उसका क्या रिलेशन है एस्पेक्ट के साथ और क्या उसका रिलेशन बन रहा है उसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है. करेक्ट. वो चीज भी इम्पोर्टेंट है. करेक्ट, वेरी ट्रू. These 3 planets you can note down as, planets which can add to your beauty. Right? One is Moon, Venus and Neptune. ठीक है? आप देख लो अपने चार्ट में ये लोग कहाँ पे हैं. सर क्यों हंस रहे हो, क्यों स्माइल कर रहे हो? लॉट ऑफ आई एम सीइंग, मैं देख ही नहीं रहा था, आप सोच रहे थे कि मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा था. Mine is very, I am a very handsome man, sir. Yes, okay, very good. Okay, so these are the planets which can give you beauty. Okay. So this lady entered the profession at a very early age, actually, because by 19 she achieved stardom. Right. So that is also indicated that the person has started in the profession at an early age. We will have to check the dashas then. Okay. Right, I have not shared the dashas with you. Correct. Right, but we'll have to check the dashas. Dashas can immediately indicate that lot of focus is happening in these areas. Okay. Right. Okay. What else? सर ये हाँ सर, ये यूरेनस नेपच्यून का काफी इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में. इसको काफी गहराई से समझना जरूरी है, ये तो समझ में आया सर. बाकी सर ये मून और प्लूटो का इसमें कोई क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा सर. मून हमने वो सवाल ही नहीं किए थे ना, तो ये थोड़ा सा इसमें क्या समझ में आएगा सर?
She had stepmom. Pluto aspecting moon. वेरी गुड पुष्पा जी, क्या बात है. ओके, ब्यूटीफुल. ट्रांसफॉर्म्ड मदर. मून सिक्स्थ हाउस में तो इंसल्ट माँ की तरफ से. सिक्स्थ स्टेप मदर जो है. Sixth and seventh both. राइट. सिक्स्थ हाउस है ना, सिर्फ इंसल्ट को मत देखना. मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में दैट इज वेरी गुड. अभी थोड़ा सा सिक्स्थ हाउस को ना, अभी देखो आपका इंसल्ट कभी कौन कब करता है, व्हेन यू डू समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. जैसे मैंने सालसा मेथड बना दी, इतने लोग इंसल्ट करते हैं मेरे, राइट. इतने लोग इंसल्ट करते हैं, राइट. सो सिक्स्थ हाउस को ना आप ऐसा भी हाउस मानो, राइट, जो मतलब हो सकता है यू हैव डन समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, लीक से हटके. हाँ, मतलब लोगों को समझ पल्ले ही नहीं पड़ता है, या फिर लोग जेलस हो जाते हैं उसके बारे में, राइट. सो सिक्स्थ हाउस कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स हाउस आल्सो. ओके. और मून इधर सेवंथ में भी जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा खुद सुंदर. हाँ, पर यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन देखिए, जैसे कि सेकंड हाउस इज द ब्रेड एंड बटर एंड नेपच्यून एंड राहु आते हैं. ब्रेड एंड बटर उनका काफी बहुत हाई लेवल पे. मून में आएंगे तो उनका जो फ्यूचर प्लान के लिए बहुत सारा पैसा कमाने के दिमाग में आया होगा. अनफॉर्चुनेटली, बट ये भी जस्टिफाई करता है राहु एंड नेपच्यून का सेकंड हाउस में प्रेजेंट होना और काफी पैसा उसी ब्रेड एंड बटर के लिए कमाना, वो भी जस्टिफाई करता है. करेक्ट है. इमोशंस, राइट. तो हो सकता है इनका इमोशनल बिहेवियर के वजह से काफी इंसल्ट किया रहेगा लोगों ने इनका, या फिर इनका इमोशनल बिहेवियर इतना भी लोगों को समझ में आया नहीं होगा, राइट. या फिर द वे दे वर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इमोशनली, दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, राइट. और कैसा होता है, जब भी बहुत बार हमें जब कुछ समझ में नहीं आता ना, हम उसको इंसल्ट करना चालू कर देते हैं. यस, है ना. तो सामने वाला जब आपको इंसल्ट कर रहा है ना कोई, आप खुश हो जाओ, ठीक है. कुछ एबिलिटी है. हाँ, हमें काबिलियत है, वो देख के डर रहा है. वो सामने वाला को समझ ही नहीं रहा है, आप क्या करोगे, है ना. आप समझ रहे हो, राइट. सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट. ओके. और जो भी आपके आज के दिन में इंसल्ट करेगा ना, बस मन ही मन में खुश हो जाना, अरे वाह वेरी गुड, ठीक है. कुछ है तभी तो लोग जलेंगे. कुछ नहीं हो तो क्या जलेंगे. करेक्ट, वेरी ट्रू. ऑलराइट. सो think of it this way. All right. So sir, one more thing sir, अभी इनका मून सिक्स्थ हाउस में बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ सर. नेपच्यून ओके अंडरस्टूड, वेन्यूस ओके अंडरस्टूड, मून इनका जो बॉडी पार्ट है सिक्स्थ हाउस में, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोलोन, वो सब कुछ है. तो उनका डाइजेस्टिव मतलब इंटरनल भी ब्यूटीफुल, एक्सटर्नल भी ब्यूटीफुल, दोनों तरफ से. हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है. इंटरनल भी बॉडी स्ट्रक्चर कोई रोग बीमारी भी नहीं हुआ होगा उतना कुछ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स. हो सकता है, अगर बीमारी होगा भी, अगर डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे भी, तो मे बी सम इमोशनल इश्यूज. बट लेकिन खैर मून पूरे भी नहीं है वहां पे, पार्शियल है. और फिर सेवेंथ में पार्शियल है ना. सर मेरा एक सजेशन है सर, स्मॉल सजेशन है. हाँ जी. हम सभी के लिए, मतलब वी आर ऑल हैविंग अ डिस्कशन, सो व्हेनेवर वी गेट इनटू दिस room, discussing room, what is happening is sometimes without our knowledge, some people we are all trying to put in our thoughts. So if we keep it harmonious, it is much better. We try to look at it like dominating kind of thing, then it becomes totally unproductive. Right. So this is just my suggestion. I'm not trying to pinpoint anybody, I'm just trying to. Of course. देखो, now in the breakout rooms also, that is also big astrological learning, right? Because everybody will behave according to their own charts and their own dashas, right? I understand what you are saying, Ramesh, right? No, I didn't understand. What does that mean? नहीं, तो breakout rooms में क्या होता है, कभी-कभी only one person starts talking, or sometimes there are some people who will automatically want attention. That also is possible, right? Then there will be some people who will want to immediately start leading the entire breakout room, right? Hey, chalo, aap video on karo, aap bolo, hey, aap bolo, right? Aap bolo, right? They will immediately want to start leading the entire breakout room. ऐसे भी हो सकता है.
right? There will be some people who will suddenly want to, ऐसा मतलब दिखाने की बहुत इच्छा हो सकती है कि मुझे बहुत आता है, ऐसे भी हो सकता है, right? So you will find, all kinds of people in the breakout room, and then expand that idea. You will find all kinds of people in the life also. Yes or no? Right? I didn't understand actually. Yeah, context. I couldn't understand. Right. So treat the breakout rooms also as your practice ground. Learning exercise. Okay. Yes, yes. Learning Yes, exercise. Okay. They are also part of. So what you can do next time? सीनियर से हम जूनियर को सीखते हैं. What you can do next time is, if such kind of an uncomfortable situation happens in a breakout, जो life में भी होगा, right? What you can do next time is just ask yourself, okay, I am being uncomfortable right now. Okay, what is that one behavior change I can follow? Right? Because we cannot immediately start controlling everybody else, right? Yes. But what is that one behavior change I can do, right? So that I can change the experience that I am having right now. As per your for example, okay, when we go into a breakout room, अभी मैं एक example देता हूँ मेरे हिसाब से. I will assume that I am a student and I am into a breakout room, and one behavior I do not like in a breakout room, or which makes me very uncomfortable, right? Sometimes is say for example, I am not able to remember any situation. I think I have become too flexible now. But still, right, I will not be able to handle someone who says something which is out of the context, right? For example, मुझे वो पसंद नहीं आएगा अगर हम बात कर रहे चार्ट के बारे में, right? लेकिन बीच में कोई बोलना चालू कर दिया, अरे लेकिन मुझे ना ये अटेंड करने होता नहीं है, मेरी ये दूसरी मीटिंग होती है, राइट? मुझे वहां पे जाना होता है, लेकिन आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ, राइट? Those kind of things I will not be able to tolerate. क्यों? Because आप क्यों आए हो breakout room में? To discuss the chat. So all of these things are irrelevant. है कि नहीं? Right? You are here, enjoy this moment. Contribute to the chat. वैसे भी अपना time limit भी रहता है, 33 minutes ही रहता है, 30 minutes ही रहता है, right? उसी में आप 5 मिनट ये सारा चीज बोलने में गला दोगे, so it is wastage of everybody's precious time, right? Okay, so then you have to ask yourself, okay, so I will ask myself, Sudhir Bhaiya, you are very, uncomfortable with this kind of a situation, that this person is taking up 5 minutes, right? And there is nothing productive happening in the breakout room, right? Okay, then I have to ask myself, what is that behavior change I will do so that we can come out of the situation, right? So normally, see, my mood of Sun or mood of Mars is very low, right? It is negative. Most of you know that, right? So normally in such a situation, normally I keep quiet, right? Or I don't respond, right? Okay. Actually, sir, यहाँ पे अपना जो So what I would do here, I would change my behavior and I would ask myself to become aggressive. Yes. Which normally I don't do. है ना? So what I would do, I would immediately switch on my mic and I would immediately interrupt and I would immediately say the name of that person and I would literally ask, what are you doing? We are here to do this. Let us do this. Right? That is how I would have, that is a behavior change I would have done, which normally I don't do. Yes. If I was a student amongst you, right? इसलिए वो mood of the planets आपको मालूम होना ना बहुत जरूरी है, because most of the times those planets which are weaker, वहीं पे अपने को behavior change लाना पड़ता है,
most of the time. Mostly they also get triggered. Right? And yeah, वही situations trigger भी होंगे, वही frustrations भी trigger होंगे. Are you understanding this? Yes. Right? So use these breakout rooms as a nice practice ground also. Right? And with the right intention, with the right frame of mind, right? Practice all the planets here. That is why we meet in the SARAS meetings, right? Yes, Imrashmi ji? Sir, मैं कहता हूँ सर, मैं when in life situations में कैसे मैं ये करता हूँ, I always keep my ascendant planet. My ascendant planet are in a cusp. Moon and Gemini both are subject. So how would my ascendant planet would be behaving in that particular given that situation, and I do react. And planet Gemini है तो very Mercury है तो very polite, diplomatically, intelligently, because Gemini cannot afford to have enemies and all. So very intelligently, very politely, just keep quiet, smile, and let the situation go. Mars अब होगा तो just aggression जिसका Mars होगा तो aggression करेगा ही करेगा, वो तो छोड़ेगा ही नहीं. So as per our me planet, मेरा तो cusp है, इसीलिए I can understand. Me planet के हिसाब से I think that every aspect of the life, every second me planet की जरूरत पड़ती है. तो वही अपना अपना तरीका है. So you have to find your way, है ना? But planets which are in lower mode of salsa mode, most of the times you will find situations that you have to express their energies, you have to bring out that energy, right? ऐसे situations आएंगे, right? And you have to practice doing that, all right? Okay. All right. And ये करने से क्या होगा मालूम है? Slowly, steadily, you will come to a state wherein you are absolutely okay with everything. Yes, true, absolutely. Okay, no matter what happens, right? You are confident and you are okay with everything. Okay, chalo, on that note, let us close for the day. All right, thank you all for attending. Okay, I hope you carry forward the learnings and you apply to your life. Okay, that is what is very important. Okay, apply the learnings to your life. Okay, okay, so take care. Bye bye. See you. And very soon the video will be uploaded on YouTube. Mastermind will be there. Mastermind class है सर अभी शाम को. शायद नहीं होगा. I'll just send a message. Okay. Okay. Because we are doing level 4 live चल रहा है ना. So I think एक बार वो कर लेते हैं, then we will resume with the mastermind. Let's see. I'll just put a message. All right. Okay. See you. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Good day, sir. Good day. Thank you, sir. Thank you.